Greetings everyone, welcome to lecture 5 of economic survey and the trends and the analysis sector wise हम यहाँ पे अब आगे बढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर लार्जली हम डिस्कशन करेंगे और अगले जो पॉइंट्स हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, सर्विसेज एक्सटर्नल, फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो आपको अगले लेक्चर 6 में देखने को मिलेगा। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है और क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग क्या कह रहा है, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि देखिए प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस इन्हीं स्कीम्स के ऊपर और रिसेंट जो ट्रेंड्स होते हैं इन्हीं के ऊपर आ जाते हैं। अब इनको आप कैटेगराइज कर सकते हैं साइंस एंड टेक में, एनवायरनमेंट में, ह्यूमन जोग्राफी में या इकोनॉमी में। बट ये सब कुछ इकोनॉमिक सर्वे से काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया जा सकता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक सर्वे की एक अपने आप में एक स्टडी मटेरियल की तरह देखने को मिलती है, राइट, गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर। तो इसलिए आप इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, कॉपी और पेन लेके बैठिए और यहाँ पे नोट करते हुए चलिए कि क्या है करंट ट्रेंड्स। यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो बजटरी एस्टिमेट्स हैं, राइट, वो डिफरेंट सेक्टर्स के लिए बताए गए हैं। एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज और टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर आपको यहाँ पे लगभग 80.1 लाख करोड़ का अगर दिखा रहा है तो उसमें 21.3 लाख करोड़ सोशल एक्सपेंडिचर पे है, राइट। और आपको जो ये ऑरेंज वाली लाइन है ये सोशल सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर बता रही है और ये एज परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर बता रहा है आपको। तो ये ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब सेंटर और स्टेट्स का जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अमाउंट होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। और आपको ग्रोथ दिखाई देगी कि परसेंटेज ऑफ जीडीपी की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट जो है सोशली बढ़ाया जा रहा है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में the share of total investment and expenditure on social services has increased to 26.6% than the previous year. Rapid increase on expenditure on health services from 21% to 26% in just 4 years. India was ranked 132 out of 191 countries in Human Development Index, right? 132nd out of 191. 16.4% of the population in India are multidimensionally poor. Now, multidimensional poverty index is released by United Nations Development Program. All right. So these are facts that you need to remember. एंड इसीलिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट क्या है, इन्वेस्ट करती है। ये कुछ डेटा सेट्स हैं हमारे पे। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की यहाँ पे बात हो रही है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की, जिसमें 111 डेवलपिंग कंट्रीज़ को असेस किया गया। एज रिगार्ड्स इंडिया, द सर्वे डेटा फॉर 2019 हैज़ बीन यूज्ड। इन एस्टिमेट्स के हिसाब से 16.4% of the population in India, that is close to 228.9 million people in 2020, is multidimensionally poor. Additional 18.7% is classified as vulnerable to multidimensional poverty. Now, this is a very significant incident of deprivation in India. The average deprivation score among people living in multidimensional poverty is 42%. The MPI value, which is the share of population that is multidimensionally poor adjusted by intensity of deprivation, is 0.069. Now, in this, you will find that there is a reduction in the percentage of multidimensional poverty. It is largely 16.4% this year. 16.4%. Significant drop. But this drop, we cannot say that it is very satisfactory. This drop is not very satisfactory, right? Because the rate is so slow. If you look at this period, it is talking about 10 years, right? So from 65 to 37, almost like 60% drop uh, took place for a period of 10 years. And in this, it is only we're talking about 5 years. And from 37 crores to 23 crores, then again, it is also close to around 40% drop. But we cannot be very, very satisfied because by then in 15 years, multidimensional poverty index should have been eradicated. But then this is a slow process.
अब दिस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम को भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिमूव करने के लिए हेल्थ, एजुकेशन, सोशल यूटिलिटी सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन और सोशल यूटिलिटी सर्विसेज बढ़ाने के लिए बनाया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इनिशिएटिव 2018 में लॉन्च किया था, जहाँ पे न्यू इंडिया बाय 2020 का विजन रखा गया था। फोकस वॉज टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड ensuring inclusive growth. Overall, there are 117 aspirational districts spread across 28 states and union territories. This has been identified by Niti Aayog based on composite indicators ranging from health and nutrition, education, agriculture, water resources to financial inclusion and skill development. These are the areas where government is focusing on increasing the social infrastructure. These are health, education, nutrition, agriculture, water resources, financial inclusion, skill development. Now, what have been the achievements of the program so far? As per the Aspirational District Program, many cities have performed well in health and nutritional standards. There is a decline in maternal and infant mortality rates. The incidence of anemia, that is the problem of deficiency of iron, is less now in pregnant women, and the primary enrollment of children in primary education has also increased. Now, because of this aspirational district program. Now, program monitors 5 focus sectors. All districts have made significant improvements across different indicators. Under health and nutrition, 46 districts have improved. 23 districts have improved up to 69% in critical indicators related to pregnant women's health, which has a bearing on maternal and infant mortality rate, right? Antenatal care checkups, regularity of supplementary nutrition intake by pregnant women, and timely anemia detection, all these have been maintained. Under education, 46 districts have improved up to 34% and 29 districts have improved up to 49% in critical indicators, which ultimately affect the learning outcomes attained by students, such as percentage of elementary schools complying with Right to Education Act, pupil teacher ratio, percentage of schools with functional drinking water facility, schools with functional girls toilets. Now, the focus is on learning outcomes and focus is on pregnant women's health. Now, if you can understand and if you can read between the lines, you will identify that ultimately the government is under aspirational districts. These are the critical areas that they're looking, and largely much of the cities are showing greater, or you can say better results. While monitoring the outcome of financial inclusion, it was seen that ADs, aspirational districts, have performed better than non-aspirational districts. So financial inclusion is also an important part. This means more people have access to bank accounts, more have been covered under the fold of government insurance schemes, and more can secure mudra loans in aspirational districts. Now, several aspirational districts have reported saturated in the basic infrastructure indicators like the percentage of households with electricity connection, percentage of habitations with access to all-weather roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, cumulative number of kilometers of all-weather road completed as a percentage of total sanctioned kilometers in the districts under Gram Sadak Yojana, and percentage of households with individual household washrooms. Now, in this you will find that the health critical area is pregnant woman, right? Health critical area is pregnant woman. Now with education, they are focusing on learning outcomes. They are focusing on learning outcomes. With respect to banks, they are looking at financial inclusion, right? In this, you will find Jandhan account, Jandhan and Mudra to be important. Post that, they are also looking at basic infrastructure, like access to all weather roads. So Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is important, right? Household washrooms and all that. These all things have become important. सोशल सेक्टर रिफॉर्म्स में एक और तरीके के रिफॉर्म्स होते हैं, लेबर रिफॉर्म्स. तो अभी तक हमने यहाँ पे जो भी देखे वो हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को डिस्कस किया, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है सोशल सेक्टर में. मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को भी डिस्कस किया.
और अब हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं लेबर रिफॉर्म्स की तरफ कि किस तरीके से लेबर सेक्टर में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए हैं इन 2019 एंड 2020। अब मैं डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा है वो आपके सामने रख रहा हूँ। इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है एज इट इज़ प्रेजेंटेड। उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है, राइट, वो सभी चीज़ें यहाँ पे हमने इंक्लूड की हुई हैं, है ना। ये जो भी पीडीएफ है ये आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करने वाली है, बिकॉज इसमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो लेबर रिफॉर्म्स की बात करें इन 2019 एंड 2020, 29 central labor laws were amalgamated, rationalized, and simplified into 4 labor codes. There is a labor code on wages 2019, industrial relations code 2020, code on social security 2020, occupational safety, health and working conditions code 2020. So please remember the name of the 4 codes, right? And how many central laws? 29 central labor laws. So there is a code on wages, there is a code on industrial relations, there is a code on social security, there is a code on social security, and there is a code on occupational safety, health and working conditions. As you know, labor is under concurrent list, right? The new laws are in tune with the changing labor market trends and at the same time accommodate the minimum wage requirements, welfare needs of the unorganized sector workers, including the self-employed and migrant workers within the legislative framework. Now these are the plus points. So they are also important for your prelims, because what are the objectives of the 4 labor codes? So they are also trying to include minimum wage requirement वाली चीज़ें, wage security, welfare of the unorganized sector is also there, self-employed and migrant workers are also there. Now labor codes have been aligned with the present economic scenario and technological advancements, along with reduction in multiplicity of definitions and authorities. The code also eases compliance mechanism, which is aiming to promote ease of doing business, setting up of enterprises, and catalyze creation of employment opportunities. Catalyzing the creation of employment of opportunities while also ensuring that safety, health, and social security of every worker remains. Now, for that, use of technology such as web-based inspection has been introduced in order to ensure transparency and accountability in enforcement. Decriminalization of minor offences have also been provided in the labor codes. Now, rules are made under the codes have been entrusted to central government, state government, and at appropriate level. There is no requirement for pre-publication of rules in the official gazettes for public consultation. From 30 December 2022, 31 states have also republished the draft rules under the Code on Wages, Industrial Relations Code, Code on Social Security, and Occupational Health and Working Conditions. Now, because it is a part of concurrent list, labor, so definitely states are going to give their uh, changes. Like they are also going to make some changes on these wages, right? There can be state amendments. So here is a list that will help you to identify that code of wages में 31 states है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में 28 स्टेट्स ने ऑलरेडी सहमति कर दी है, सोशल सिक्योरिटी में 28 है और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ में 26 स्टेट्स ने अपने डेटा को पब्लिश किया है, राइट। द अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज ई श्रम पोर्टल. It's a initiative, very important initiative, and it is also with respect to what the government is doing for our unorganized sector, right? What are the rights, or you can say things available, right? So very first aspect is that we do not have recognition. I mean, we do not have recognition, or we have not identified the skill sets of our workforce.
So if you want to do anything, change anything, you need to first identify or recognize the skill sets of your workforce. Now, unorganized sector is such that it is very difficult for the government. So for that very same reason, e-Shram portal has been announced. Now, government is also trying to improve life and dignity of labor force of the country by protecting and safeguarding interest of workers, promoting their welfare, providing social security both in organized and unorganized sectors. For the very same reason, Ministry of Labor and Employment has developed the e-Shram portal, which will create a national database of unorganized workers, which will be verified by Aadhaar. It captures details of workers like name, occupation, address, occupation type, educational qualification, and skill types for optimum realization of their employability and extend the benefits of the social security schemes to them. जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये वर्कर की डिटेल्स आइडेंटिफाई करता है, नाम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, ऑक्यूपेशन टाइप, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड स्किल टाइप्स, ताकि उनके जो काम के जो स्किल्स हैं उसको रोज़गार मिल सके और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का बेनिफिट मिल सके। ये सबसे पहला डेटाबेस है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का, जिसमें माइग्रेंट वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। ई श्रम पोर्टल को एनसीएस पोर्टल और असीम पोर्टल के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। दिसंबर 31, 2022 में 28.5 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड workers have been registered on the e-Shram portal. Female registration stood at 52.8% of the total 61.7% of total registrations that belong to the age group of 18 to 40 years. Uttar Pradesh 29.1%, Bihar 10%, West Bengal 9% accounted for nearly half of total registrations. Agriculture sector workers contributed to 52.4% of the total registrations, followed by domestic and household workers and construction workers. Now, this is the labor map of your country. This is the labor force map of your country, where you will find that UP, Bihar and West Bengal, they have large chunk of unorganized sector workers, right? This is very important for us to understand. Along with this, with regards to the skill sets, or you can say occupational type, right? You will find that construction workers, domestic and household workers, agricultural sector workers are in large quantity. All right. E-Shram portal. Now, what are the other initiatives that the government has taken, right, to improve the social sector areas which have been a part of your economic survey? Now, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में आधार का यूजेज, जब एक बैंक अकाउंट आधार के साथ जुड़ जाता है तो वो फाइनेंशियल एड्रेस बन जाता है एक इंडिविजुअल का, और फाइनेंशियल इंक्लूजन का गोल हमारा हेल्प हो जाता है वहाँ पे। द नंबर इज सफिशिएंट टू ट्रांसफर एनी पेमेंट टू एन इंडिविजुअल्स बैंक अकाउंट थ्रू आधार पेमेंट ब्रिज, eliminating the need to give other details like bank account, IFSC code, bank branch details to government institutions, etc. ये जो सिस्टम है, ये आधार पेमेंट ब्रिज जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में यूज किया जा रहा है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स AEPS के इंडिविजुअल को बेसिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करने में हेल्प करता है, जैसे विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट एक्सेट्रा बाय सिंपली यूजिंग हिज आधार. This has immensely facilitated providing doorstep banking services and mitigate the hardships of the people due to COVID-19 pandemic. जन धन, आधार और मोबाइल जैम ट्रिनिटी जो है, combined with the power of direct benefit transfer, has brought the marginalized sections of society to the formal financial system, revolutionizing the path of transparent and accountable governance by empowering the people. Now, because of jam trinity, the marginalized community कौन होती है? मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के पास बेसिक एजुकेशन नहीं है, बेसिक हेल्थ नहीं है, वल्नरेबल है, पैसे भी नहीं है, राइट? सोशल मार्जिनलाइजेशन हो सकता है, इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन हो सकता
उसको फाइनेंशियल सिस्टम का एक पार्ट बनने का मौका मिला। बहुत सारी सेंट्रल लॉ स्कीम्स जैसे कि पहल, मनरेगा, इन सब के पेमेंट करीब करीब जैम की वजह से पॉसिबल हुए। डेटा है यहाँ पे 7,66,055.9 करोड़ ओवर 1,010 करोड़ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस के तहत किए गए। वन नेशन वन राशन कार्ड की जो स्कीम है उसमें भी आधार ने एक मेजर रोल प्ले किया है। आधार सीडिंग ऑफ द पीडीएस डेटाबेस, आधार सीडिंग कह रहे हैं, आधार सीडिंग ऑफ द पीडीएस डेटाबेस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के डेटाबेस से सिग्निफिकेंट सेविंग्स निकल के आई हैं। होस्ट और डुप्लीकेट बेनिफिशरीज को हटाया जा चुका है। ग्रेन डिसबर्सल थ्रू आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन has brought meaningful transparency and back office improvement of logistic networks of PDS. Redistribution of food grains under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana has greatly mitigated COVID's pandemic impact, especially for the weakest and most vulnerable sections of the society. Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM Kisan) Aadhaar platform forms the backbone of the implementation, right from the registration through Aadhaar eKYC to DBT through APB. CoWIN portal, successful management of the COVID pandemic. Without the CoWIN platform would not have been possible. In this also Aadhaar has played a vital role in developing the CoWIN platform in transparent administration of over 2 billion vaccine doses. Now this is the importance of Aadhaar enabled systems. You can find that Aadhaar has contributed so much in the social sector reforms. Okay? समझ पा रहे हो बात को, क्या क्या चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लेबर रिफॉर्म्स डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे ना, लेबर रिफॉर्म्स को डिस्कस कर रहे थे और अब हम देख रहे हैं आधार इनेबल्ड सर्विसेज जो है वो कैसे इंप्रूव हैं। अब वर्कर्स की जो कंडीशन है, जो लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन है, जैसा कि आपको पता चल रहा है कि वो भी लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन भी बढ़ते हुए दिखता है अपने को। तो सेक्टर वाइज शेयर ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू क्वार्टरली एस्टिमेट्स, इसमें सबसे ज़्यादा लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। उसके बाद आपको दिखाई देगा एजुकेशन सेक्टर में 22%, ये एजुकेशन सेक्टर है, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। फॉलोड बाय आपको 12% इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बीपीओज में दिखाई देगा और फिर आपको हेल्थ सेक्टर दिखाई देगा। ये मेजर सेक्टर्स हैं। बहुत कम लोग एकोमोडेशन रेस्टोरेंट में, सबसे कम लोग एक तरीके से आपको इसी में दिखाई देंगे। ट्रेड करने वाले लोग बहुत कम, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में बहुत कम। कि टोटल एम्प्लॉयमेंट का जो चार्ट है इसमें आपको सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग में दिखाई देता है, फॉलोड बाय एजुकेशन में दिखाई देता है, फॉलोड बाय हेल्थ में दिखाई देता है और उसके बाद आप थोड़ा सा आईटी और बीपीओस देखेंगे। और वर्कर्स की बात करें अगर, तो वर्कर्स जो है वो फोर्थ क्वार्टर में 318 लाख जो है दिखाई दे अपने को, 318 लाख वर्कर्स जो है लेबर ब्यूरो डेटा। ये भी एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है जो कि बताता है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हर सेक्टर में बढ़ रहा है। अब कुछ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसकी लिस्ट है यहाँ पे, जिसके ऊपर आप अपना नोट्स बना सकते हैं और यहाँ से आप रिवीजन भी कर सकते हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स के ऊपर। स्कीम्स को मैं ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूँ बट मैं आपको ये लिस्ट बता दे रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्किल डेवलपमेंट की है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम भी स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, स्किल एक्विजिशन नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन संकल्प इनिशिएटिव अगेंस्ट स्किल डेवलपमेंट से है, जीवन ज्योति बीमा सुरक्षा बीमा योजना ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है, प्रधानमंत्री स्वनिधि मुद्रा योजना ये सब आपके इससे रिलेटेड है। जैसे स्वनिधि में तो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, मुद्रा योजना में इजी लोन है, राइट। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण आवास योजना, जल जीवन मिशन, जलदूत ऐप, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सिलेंडर से रिलेटेड है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी स्कीम्स के ऊपर आप अपने नोट्स बना सकते हैं जो कि इकोनॉमिक सर्वे में आए हैं।
अब मेजर एजेंडा है इस पर्टिकुलर लेक्चर में क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के ऊपर डिस्कशन। मेजर एजेंडा है हमारा क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के ऊपर डिस्कशन, राइट। अब अगेन हमें बहुत ही इत्मीनान से, आराम से इस चीज़ को डिस्कस करना है, तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। नेट ज़ीरो प्लेजेस ऑफ कंट्रीज़, ये हम कंपेयर कर लेते हैं पहले, बिकॉज यू नो क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट गोल्स जो हैं ये, इसके लिए फाइनेंस का रिक्वायरमेंट है। फाइनेंस किसको चाहिए है? फाइनेंस डेवलपिंग कंट्रीज़ को चाहिए। फाइनेंस डेवलपिंग कंट्रीज़ को चाहिए, क्योंकि आईपीसीसी की रिपोर्ट कहती है कि जो भी अभी करंटली कार्बन एमिशंस हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा किए गए हैं। डेवलप कंट्रीज़ के द्वारा किए गए हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन के लिए $100 बिलियन, $100 बिलियन कमिट किया गया है। इसमें कंट्रीज़ ने अपने जो गोल्स हैं, जिनको आप किस नाम से जानते हो, एनडीसी के नाम से जानते हो। क्या होते हैं ये? इनका मतलब होता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। यानी एक कंट्री अपने रिसोर्सेस की कैपेसिटी के हिसाब से किस तरीके से क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करेगी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, और क्लाइमेट चेंज के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगी। क्लाइमेट चेंज का ऑब्जेक्टिव पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, जो कि COP21 था, उसमें डिसाइड हुआ था, और क्योटो प्रोटोकॉल से एक प्रिंसिपल निकल के आया। क्योटो प्रोटोकॉल से एक प्रिंसिपल निकल के आया जिसमें ये टर्म यूज होता है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस वर्ड का मतलब ये है कि सभी कंट्रीज़ की कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या? क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो उनकी कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग होगी, डिफरेंशिएटेड होगी। उस चीज़ को पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के साथ भी जोड़ा गया, और वहीं पे निकल के आ रहा है अलग अलग ईयर सब कंट्रीज़ ने दिए हैं। तो इंडिया ने नेट न्यूट्रलिटी 2070 तक, चाइना, इंडोनेशिया, रशिया, सऊदी अरेबिया ने 2060 तक, टर्की ने 2053 तक, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, ईयू, फ्रांस, इटली, जापान, साउथ अफ्रीका, कोरिया, यूके, यूएसए 2050, और जर्मनी थोड़ा सा अलग हो रहा है, उसको पहले, काफ़ी पहले कहा जा रहा है, 2045 में कार्बन न्यूट्रल है। तो ये सब कंट्रीज़ ने अपने अपने ईयर्स बताए हैं, जिसमें इंडिया सबसे लास्ट में कार्बन न्यूट्रल होने की बात कर रहा है। क्योंकि अगर कार्बन एमिशंस की बात करें तो ये कार्बन एमिशंस में एक मेट्रिक होता है, पर कैपिटा एमिशन। ठीक है, पर कैपिटा एमिशन। ऐसे भारत ओवरऑल थर्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है, लेकिन पर कैपिटा, पर इंडिविजुअल बात करें तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो टॉप 10 में भी इंडिया नहीं आता है, बहुत नीचे है पर कैपिटा। इंडिया के ऊपर भी सेम प्रेशर लगना चाहिए, क्योंकि बात फाइनेंस से रिलेटेड है, इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे में इसके ऊपर चर्चा आ रही है। क्योंकि गवर्नमेंट को काफ़ी सारा अपना बजट रीएलोकेशन इस तरीके से करना है कि क्लाइमेट चेंज के फैक्टर्स और टारगेट्स को वो इंक्लूड करते हुए चले। पूरी दुनिया आपके बजट में आपके क्लाइमेट ट्रांजिशन के ऊपर बात करेगी। उसी के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर 8 नेशनल मिशन जो हैं वो अनाउंस किए हैं। इसमें नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम्स, नेशनल मिशन फॉर सस्टेन्ड एग्रीकल्चर। These are the 8 missions: solar mission, energy efficiency, sustainable habitat, green India, water, climate change, Himalayan ecosystem, sustainable agriculture। इनके अचीवमेंट्स जो हैं वो आपको बताए गए हैं
इकोनॉमिक सर्वे में। सोलर पावर कैपेसिटी 61.62 गीगावाट की हो गई है। 721 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क, सस्टेनेबल हैबिटेट, 62.7 लाख इंडिविजुअल हाउसहोल्ड टॉयलेट्स, 6.21 लाख कम्युनिटी पब्लिक टॉयलेट्स, ग्रीन इंडिया के लिए एफॉरेस्टेशन टारगेट्स, नेशनल वाटर मिशन के लिए जल शक्ति कैच द रेन इनिशिएटिव, 12 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, और फाइनली आपको दिखाई देगा ऑर्गेनिक फार्मिंग और माइक्रो इरीगेशन। ये सब चीज़ें अनाउंस की जा रही हैं एज टारगेट्स एंड अचीवमेंट्स। नाउ नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, this is also one of the important schemes. National Adaptation Fund for Climate Change. It's a central sector scheme which was initiated in 2015-16 to support adaptation activities in the states and union territories of India which are vulnerable to adverse effects of climate change. NAFCC is implemented in project mode, and to date 30 projects have been sanctioned in 27 states. Amount 847.5 crore. National Adaptation Fund for Climate Change supports adaptation action in agriculture, water, forestry, livestock, restoring ecosystems. 28 projects are already under implementation. So you need to notice the work area of this particular fund. In climate action, India has been demonstrating higher ambition. The government has updated its nationally determined contributions on 26 August 2022. The new NDC with enhanced targets, that is what is called as Panchamrit, that we gave at COP26 in Glasgow in November 21. The vision mentions sustainable lifestyles, climate justice to protect poor and vulnerable from adverse impacts of climate change. Aligning with this vision, non-fossil fuel based capacity in overall capacity has risen rapidly over time. Non-fossil fuel based capacity. Large hydro, non-fossil sources is total electricity capacity is almost 40.4% compared to 27.3% almost 6 years back. Now the period of the sizable enhancement in the share of installed electricity in solar and wind energy has also risen. Now these are the things that you need to understand. So what are India's nationally determined contributions? Now India had submitted its first NDC in 2015. This was updated in 2022. 2015 NDC comprised 8 goals, 3 of which were quantitative nature to be achieved up to 2030. The 3 targets included cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel sources to reach 40%, reduction in emission by 33 to 35% compared to 2005 levels, and additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tons of CO2. Article 4 of the Paris Agreement provides each party shall communicate or update its NDC every 5 years. Prelims fact. Right? Every 5 years. Therefore, in accordance with the aforesaid provision of Paris Agreement, India submitted the following updated to its NDC of 2015. Now, look at these targets. There are around 8 targets, not just 5, there are 8 targets. To put forward and further propagate a healthy and sustainable way of living based on traditions and values of conservation and moderation through a mass movement called as lifestyle for environment, right? To adopt a climate friendly cleaner path than the one followed hitherto by others at the corresponding level of economic development, to reduce emission intensity of its GDP by 45% by 2030 from the 2005 level, to achieve about 50% cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel based energy sources by 2030, to achieve about 50% electric power capacity from non-fossil fuel based energy sources 2030 with the help of transfer of technology and low cost international finance, including the Green Climate Fund. Prelims fact, right? To create additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tons of CO2 equivalent to additional forest cover by 2030, to better adapt to climate change by enhancing investments in development programs
in sectors vulnerable to climate change: agriculture, water resource, Himalayan region, coastal region, health and disaster management. Mobilize domestic and additional funds from developed countries to implement above mitigation adaptation actions in resource required and resource gap. To build capacities, domestic framework, international architecture for quick diffusion, cutting edge climate technology in India, and joint collaboration, research and development for such future technologies. So this is the nationally determined contributions given by India in 2022. Now, the status of forest cover and tree cover also reflects the kind of environment that India is catering to, Indian economy is catering to. One of the three quantifiable targets of India's NDC is to achieve an additional carbon sink of this 2.5 to 3 billion tons additional forest cover by 2030. The forest and tree cover in India has shown a gradual and steady trend of increase in the last 1.5 decades. That means in past 15 years, the forest cover has increased. The country ranks third globally with respect to the net gain in average forest area between 2010 and 2020, which means third largest, strongest country here in terms of increase in forest cover. In terms of increase in forest cover, right? The gain is mainly attributed to the robust framework and policies of the national and state governments that have promoted schemes like Green India Mission, Compensatory Afforestation and Fund Management and Planning Authority, National Afforestation Program, Green Highway Policy 2015, Policy for Enhancement of Urban Greens, National Agroforestry Policy, and Agroforestry Submission are the important ones. With regards to carbon stock in India's forest and tree cover, the forest ecosystem is vital sink of carbon. जितनी ज़्यादा फॉरेस्ट जितनी ज़्यादा होती है, कार्बन का जो सिंक है, कार्बन एब्जॉर्प्शन जो है वो उतना ज़्यादा होता है, राइट? जितनी ज़्यादा फॉरेस्ट कवर होता है उतना ज़्यादा कार्बन सिंक होता है. तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने कार्बन स्टॉक विच इज़ द अमाउंट ऑफ कार्बन सिक्वेस्टेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर and stored in biomass, deadwood, soilwood and litterwood. Now please remember that it is talking about carbon sequestration, right? Carbon sequestration के बारे में बात कर रहा है. Carbon sequestration means it's the absorption and storage. It's the absorption and storage of carbon from atmosphere and stored in biomass, right? For the first time in 2004 this was assessed, and then biennially since 2011. The Indian State of Forest Report estimates the carbon stock of forest to be about 7,204 million tons in 2019, which is an increase of 79.4 million tons of carbon stock as compared to the estimates of previous assessment for 2017. This translates into carbon emission sequestration through forest and tree cover to be 30.1 billion tons of CO2 equivalent, right? So you will find that based on this, the carbon stock has been increasing on year basis, right? Among the Indian states, Arunachal Pradesh has the maximum carbon stock in forests, followed by Madhya Pradesh. The per hectare forest carbon stock among different states UTs indicates that Jammu and Kashmir is contributing the maximum per hectare carbon stock, followed by Himachal Pradesh, Sikkim, Andaman and Nicobar Islands. कार्बन सिंक के हॉटस्पॉट्स आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, राइट? ऑल्सो यू विल फाइंड दैट द मैंग्रोव कवर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, विच मीन्स ओशन रिलेटेड डिजास्टर्स से जो आपका नेचुरल वॉल है वो भी काफ़ी हद तक ग्रो कर रहा है, जो कि फॉरेस्ट सर्वे में हम लेते हैं अपवर्ड टिक है, प्रीवियस ईयर में आपको दिखाई देगा. और ये आपको दिखाई देता है कि स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2 ईयर्स में एक बार आती है, राइट? क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट के ऊपर प्रिपरेशन टू फेस द फ्यूचर विद अ विजन टू मेक इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट नेशन एंड टू डीकार्बनाइज द क्रिटिकल सेक्टर्स,
Government has also announced National Green Hydrogen Mission on 4th of January 2023. National Green Hydrogen Mission with an additional outlay of around 19,744 crores. Now we are going to promote, increase the demand, production, utilization and export of green hydrogen and mobilization of around 8 lakh crore of investment by 2030. Mobilization of 8 lakh crore of investment by 2030. It's a very huge amount. So what are the likely outcomes of National Green Hydrogen Mission? So what we are trying to build is we are trying to build 5 MMT metric million ton per annum production capacity of green hydrogen. Along with this, we are also going to reduce the fuel imports over 1 lakh crore and we will create 6 lakh jobs. Renewable energy capacity addition of about 125 gigawatt is also observed. So government will have to intervene financially by targeting domestic manufacturing of electrolyzers and production of green hydrogen and regions capable of supporting large-scale production or utilization of hydrogen to be developed as green hydrogen hubs. Now, policy framework, the development of an enabling policy framework to support establishment of green hydrogen ecosystems, robust standards and regulations framework, public-private partnership and skill development program. These all things are a part of National Green Hydrogen Mission. The target is 5 million metric tons green hydrogen production per annum. Along with this, the government also for the very first time has issued green bonds. Now, green bonds are basically government securities where they issue it to raise money for climate change efforts. Right? So these are the financial instruments that generate proceeds for investment in environmentally sustainable and climate suitable projects. Environmentally sustainable and climate suitable projects. With the growing focus on the environmental sustainability of projects, green bonds are widely accepted as an instrument to raise funds to support climate environmental projects and command a relatively lower cost of capital vis-a-vis regular bonds. Many countries including UK, France, Germany, USA and China have started issuing greener bonds. IMF data indicates that US $620 billion were issued across the world in 2021. Countries have issued green bonds more than 587 billion US dollars, right? SEBI's data on green debt securities during the period पिछले 5 सालों में 15 इंडियन कॉर्पोरेट्स ने ग्रीन बॉन्ड्स इशू करके 4,549 करोड़ 4,539 crore have been generated. Now most of these are for renewable energy generation while one is related to tertiary treatment of wastewater, right? In which the largest ever green bonds issued are by United Kingdom, with the lowest being that of Colombia, and India is not even very close. It is very less amount, but then green bonds are also being issued. So always remember, प्रीलिम्स के पॉइंट में ये ग्रीन बॉन्ड्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसका बेसिक फंडामेंटल वर्किंग याद रखेंगे. दूसरा जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है क्रिटिकल मिनरल्स वाला. क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं. क्या होते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं. ये हर जगह पे नहीं मिलते और क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो बैटरी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. और बैटरी लाइफ आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेके आपके इलेक्ट्रिसिटी और नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, राइट? तो ये शिफ्ट टू क्लीन एनर्जी सिस्टम इज सेट टू ड्राइव अ ह्यूज इंक्रीज इन द रिक्वायरमेंट्स फॉर क्रिटिकल मिनरल्स. नाउ क्रिटिकल मिनरल्स टेक्नोलॉजी जो है, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, ये ट्रेडिशनल हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेस से अलग है. अब क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें तो कोबाल्ट, कॉपर, लिथियम, निकल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स ये सब क्रिटिकल है फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड बैटरीज एंड हार्नेसिंग सोलर एंड विंड एनर्जी. सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स, विंड फार्म्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सब बहुत ज़्यादा मिनरल्स रिक्वायर करते हैं.
एक कहते हैं कि एक टिपिकल इलेक्ट्रिक कार जो है उसमें 6 गुना ज़्यादा मिनरल इनपुट लगता है देन अ कन्वेंशनल कार। एक ऑन शोर विंड प्लांट में 9 टाइम्स मोर मिनरल लगता है एक गैस फायर पावर प्लांट के कंपैरिजन में। तो एनर्जी ट्रांजिशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि क्रिटिकल मिनरल्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। द टाइप्स ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेज यूज बाय वेरी बाय टेक्नोलॉजी। जैसे लिथियम, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज और ग्रेफाइट को बैटरी परफॉर्मेंस के लिए यूज़ किया जाता है, लॉन्गिविटी और एनर्जी डेंसिटी के लिए। रेयर अर्थ एलिमेंट्स को परमानेंट मैग्नेट्स के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि विंड टर्बाइन्स और ईवी मोटर्स के लिए ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट कॉपर और एल्युमिनियम का चाहिए रहता है, कॉपर बीइंग द कॉर्नरस्टोन फॉर ऑल इलेक्ट्रिसिटी related technologies. While the demand for critical minerals is set to increase because the global preference and emphasis towards renewable energy, global supply chain of the critical minerals is highly concentrated and unevenly distributed. The skewed distribution of the resource poses a supply risk in the face of its enhanced demands. Now, these are the prospects that is being discussed, right? तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रीन ट्रांजिशन में इंडिया के पास क्या सिर्फ फंड्स की कमी है, क्या सिर्फ फंड्स ना होने की वजह से इंडिया ग्रीन एनर्जी में ट्रांजिशन नहीं कर पाएगा, तो आप इसका आंसर ऑब्वियसली देंगे कि नहीं, ऐसा कंप्लीटली नहीं कह सकते, क्योंकि ग्रीनर इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है कि क्रिटिकल मिनरल्स अवेलेबल हों। अब क्रिटिकल मिनरल्स के साथ जो अवेलेबिलिटी में क्वेश्चन है वो यही है कि वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं। करंट अफेयर्स की न्यूज़ की बात करें तो अभी स्वीडन में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक काफ़ी अच्छा खासा रिजर्व जो है वो पाया गया है। भारत अपने क्रिटिकल मिनरल्स के लिए किस देश पर डिपेंडेंट है? चाइना पे लार्जली डिपेंडेंट है। हम अपना 80% क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स इंपोर्ट करते हैं चाइना से। ऐसे में हमें भी ऑल्टरनेटिव ढूंढने की ज़रूरत है और हमारे पास जो रिजर्व्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर यहाँ पे हम देखें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्शन सेलेक्टेड मिनरल्स देखें तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि कॉपर, अदर्स, लिथियम, अर्जेंटीना, निकल, अदर्स, कोबाल्ट, अदर्स, उसके बाद रशिया, डीआरसी और उसके बाद आपको म्यांमार दिखाई देगा। तो मल्टी डायमेंशनल मिनरल पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसमें कि हमारी डिपेंडेंस फ्यूचर चैलेंजेस सभी एड्रेस हों। कंट्रीज़ जिनके पास रिसोर्सेज हों निकल, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम और हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के, वो फर्दर एक्सप्लोरेशन भी करें और रिजर्व्स आइडेंटिफाई करें। एक स्ट्रैटेजिक मिनरल रिजर्व्स बनाने की ज़रूरत है along the lines of strategic petroleum reserves to ensure continuous supply of minerals. स्ट्रैटेजिक मिनरल रिजर्व्स और स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की कंटिन्यूस ट्रेन बनानी है। पॉलिसी शुड कंसीडर इन्वेस्टिंग इन इंटरनल रिसर्च इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसाइकलिंग, रीयूजिंग एंड repurposing technologies, the 3R technologies: recycling, reuse, and repurpose. In order to ensure mineral security of the nation, to attain self-reliance in the area, the Ministry of Mines has created a company which is called as Kabil, right? Prelims oriented question. मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है काबिल, राइट? इट्स खनिज विदेश, इट्स खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड. Now this country will acquire overseas mineral assets of critical and strategic nature such as lithium, cobalt, etc. Ministry of Mines and Government of India and Department of Industry, Science, Energy and Resources (DISER) has also participated, or you can say signed, a memorandum of understanding with Australia to secure the critical rare earth elements and reduce our dependency on China, right? So that is why I am telling you that economic survey in itself is a source of so much current affairs that आपको पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि यार कितना कुछ है जो इकोनॉमिक सर्वे से अकेले देखा जा सकता है, सीखा जा सकता है। तो इसीलिए इस लेक्चर के साथ बने रहिएगा, राइट? और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में जितना कुछ भी इकोनॉमिक सर्वे में पहली बार आ रहा है, कुछ नया आ रहा है या कुछ डिफाइनिंग है, वो सब हमने कवर किया हुआ है ना? तो
एक एल टी एल ई डी वाली जो ये एल टी एल एड्स स्कीम भी आई है, और इंडिया ने अपने लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को भी अनाउंस किया है 14 नवंबर 2022 को कॉप 27 में, जो कि इजिप्ट में हुआ था। एल टी लेट्स के ऊपर अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स में आ गया तो आप क्या करेंगे? तो इसीलिए जान लीजिए कि लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी क्या है। ये रैशनल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पे फोकस करता है, एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। द ट्रांजिशंस ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स विल नॉट बी वेरी अब्रप्ट, बल्कि उसको एक जस्ट स्मूथ सस्टेनेबल और ऑल इंक्लूसिव मैनर में करेंगे। इसी में ऑब्जेक्टिव्स जो है नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट किए गए। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कंट्री में भी बढ़ानी है। साथ ही में न्यूक्लियर कैपेसिटी को 2032 तक 3 गुना बढ़ाना है, और कुछ और माइलस्टोन्स जो हैं वो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पावर सेक्टर के अनाउंस किए गए। बायोफ्यूल्स को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, स्पेशली इथेनॉल ब्लेंडिंग। इसमें आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन को अगर हमें इंक्रीज़ करना है और हाइड्रोजन फ्यूल को भी इंक्रीज़ करना है, तभी हमारा लो कार्बन डेवलपमेंट जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में देखने को हमें मिलेगा। इंडिया मैक्सिमम इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ और इथेनॉल ब्लेंडेड अप टू 20% इथेनॉल सप्लाई 2025-26 तक करना चाहता है, और इसमें आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर बोथ पैसेंजर्स एंड फ्लाइट में ट्रांजिशन करना पड़ेगा। क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन डेवलपमेंट जो है वो स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स द्वारा ड्रिवन होगा। इसमें इंटीग्रेटेड प्लानिंग सिटीज़ की करनी पड़ेगी, एनर्जी रिसोर्स एफिशिएंसी, ग्रीन बिल्डिंग कोड्स और इनोवेटिव सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ। India's industrial sector will continue on a stronger growth path with the vision of Atmanirbhar Bharat and Make in India. Now, LT-LEDs has been prepared in the framework of India's right to an equitable and fair share of the global carbon budget, and is the practical implementation of India's call for climate justice. Right? Prelims. India's call for climate justice. This is essential to ensure that there are no constraints on realizing India's vision of rapid growth and economic transformation while also protecting the environment. The LT-LEDs is driven by the vision for lifestyle for environment that calls for a worldwide paradigm shift from mindless and destructive consumption to mindful and deliberate utilization. Now, the transition to low carbon development pathway will entail costs. In addition, the provision for climate finance by developed countries will play a very significant role, and therefore needs to be considerably enhanced in the form of grants and concession loan. इंडिया छोड़ेगा नहीं, पैसा मांगे बिना छोड़ेगा नहीं। LT-LEDs जो है ये इंडिया की जो लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है वो बता रहा है। न्यूक्लियर सेक्टर, हाइड्रोजन, सब जगह आपको बात बता रहा है, और पैसा भी मांगेगा। राइट? साथ में कुछ और इनिशिएटिव्स भी हैं जो कि हमें यहाँ पे एट लास्ट चेक करने हैं, जैसे प्रोजेक्ट चीता है और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। इन इनिशिएटिव्स के साथ इस लेक्चर को हम समराइज़ करेंगे, क्लोज करेंगे, और आपसे लेक्चर 6 में फर्दर इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं रह गई वो डिस्कस करेंगे, और इकोनॉमिक सर्वे के इस पूरे सीक्वेंस में ये हमारा आखिरी लेक्चर होने वाला है। तो अभी कुछ थोड़े से इनिशिएटिव्स को और डिस्कस कर लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में भी भारत आगे रहा। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज क्रूशियल एज इट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज एंड सर्विसेज नेसेसरी फॉर ह्यूमन बींग्स and for the sustenance of all living beings. It enhances ecosystem productivity where each species, however small, has an important role to play. In that light, May 22nd is celebrated as International Day for Biological Diversity every year globally to create awareness among citizens and stakeholders on the importance and need for the conservation of biological diversity. What is the India's rank? India's ranks 8th in the world and 4th in Asia among mega diverse countries in the world. 8th in the world and 4th in Asia. It has also rich in fauna. Nearly 62% of the recorded amphibian species are endemic to India. Most of the species are amphibians, which is majorly found in Western Ghats. India holds the 8th position for the origin and diversity of crop plants. It has more than 300 wild ancestors
and close relatives of cultivated plants growing naturally. Around 9,500 plant species are used as medicine in indigenous health practices. Local and indigenous people use more than 3,900 plant species as food, fiber, fodder, insecticides, pesticides, gum, resins, dyes, perfumes, and timber. Now, this is the importance of biodiversity. 1992 Earth Summit, which happened at Rio de Janeiro, led to the adoption of internationally binding instrument called as Convention on Biological Diversity. It had the objectives of conservation, sustainable use, fair and equitable sharing of benefits arising from the use of biological diversity. Now, COP15 on CBD that happened on 7th and 19th December in Montreal, Canada, the key outcomes we need to discuss. COP15 on CBD in Canada. Now, the target is effective conservation and management of 30% of world's lands, inland waters, coastal areas, and oceans. 17% and 10% of the world's terrestrial and marine areas are under protection. We need to increase it to 30%. Near zero, the loss areas of high biodiversity importance. The areas which are high biodiversity importance, the loss in area will be reduced and will be made zero. Global food waste should be reduced in half, and overconsumption and waste generation also has to be discouraged. Reduce to half excess nutrients and overall risk posed by pesticides and highly hazardous chemicals. Phase out or reforming subsidies that harm biodiversity by 2030 at least US $500 per year, while scaling up positive incentives for biodiversity conservation and sustainable use. Now, in this organic farming, the push that India is giving, organic farming can be associated with the objectives on CBD. Mobilize 2030 at least US 200 billion per year in domestic and international biodiversity related funding from all sources, public and private, and raise international financial flows from developed to developing countries, least developed countries, small island developing states, and countries with the economies in transition at least $20 billion per year by 2025 and $30 billion by 2030. Again, इसमें भी पैसे की जो है डिमांड हो रही है. In conformity with the spirit of Convention on Biological Diversity, India had incorporated Biological Diversity Act in 2002. Now, in this act, there is a decentralized system with National Biodiversity Authority at national level, state biodiversity boards at state level, and biodiversity management committees at local body level. Each of these entities is a statutory and autonomous body with specific mandates and powers to facilitate effective implementation of the acts and the rules. India and Nepal also have signed a memorandum of understanding in August 2022 on biodiversity conservation to strengthen and enhance the coordination and cooperation in the field of forest, wildlife, environment, biodiversity conservation, climate change, including restoration of corridors and interlinking areas, sharing knowledge and best practices between the two countries. So simply you need to understand that India and Nepal have signed an agreement for biodiversity conservation. बाकी सारे स्टेटमेंट्स देखो रिडंडेंट है ना, बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं वो वही एक ही बातें बार बार कर रहे हैं. Parties in the field of forest, wildlife, environment, biodiversity conservation, and all this, right? So, National Biodiversity Authority, State Biodiversity Boards, Biological Diversity Act 2002 और रियो डे जेनेरो का 1992 का CBD एडॉप्शन, ये सभी आपने यहाँ पे देखा है. लास्ट में प्रोजेक्ट सीता को भी डिस्कस कर लेते हैं. प्रोजेक्ट सीता को में वर्ल्ड फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर को ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है. 1952 में चीता हमारे यहाँ से एक्सटेंट हो गए थे. इसमें से 8 नामीबियन वाइल्ड चीता को 17 सितंबर 2022 को इंट्रोड्यूस किया गया कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में. 8 चीता में से देयर आर 5 फीमेल एंड 3 मेल. हिस्टोरिक री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता जो है ये लॉन्ग सीरीज ऑफ मेजर्स है जहाँ पे हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को सस्टेनेबल करना चाहते हैं. चीता से क्या हो सकता है, ओपन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम रिवाइव हो सकता है. इससे कंजर्व बायोडाइवर्सिटी हो सकती है और इकोसिस्टम सर्विसेज जैसे वाटर सिक्योरिटी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन सोसाइटी को बेनिफिट कर सकता है. ये प्राइम मिनिस्टर के कमिटमेंट के लाइन में है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के. गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स भी बनाई है जो चीता इंट्रोडक्शन को मॉनिटर करेगा. ये टास्क फोर्स हर 2 साल में ये क्या की जाएगी, बनाई जाएगी और इस टास्क फोर्स को रिव्यू करना है, प्रोग्रेस, मॉनिटर हेल्थ स्टेटस ऑफ चीता, क्वारंटाइन और सॉफ्ट रिलीज एंक्लोजर्स और ये सब ध्यान रखना है. हंटिंग एंड किलिंग एडाप्टेशन ऑफ चीता को कूनो नेशनल पार्क में मॉनिटर करना है.
क्वारंटाइन बोमास से उनको रिलीज़ कराने में उनका पूरा देखभाल करना है। ओपन चीता हैबिटेट फॉर इको टूरिज्म एंड सजेशंस इन दिस रिगार्ड बताएगा और सजेस्ट और एडवाइस करेगा टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑन द फ्रिंजेस ऑफ कूनो नेशनल पार्क एंड अदर प्रोटेक्टेड एरियाज। अगेन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। इस पूरे पूरे लेक्चर में हमने ट्रेंड्स और एनालिसिस को आइडेंटिफाई किया, क्लाइमेट से रिलेटेड सभी इनिशिएटिव्स को देखा, एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड इनिशिएटिव्स को देखा, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को देखा, इंडिया के ऊपर वेरियस स्कीम्स जो हैं सोशल सेक्टर में, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के लिए ई श्रम पोर्टल, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इन सभी को देख के अभी हम लेक्चर 5 को आपके सामने ख़त्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं और मिलेंगे आपसे इकोनॉमिक सर्वे के लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 6 में।